वीडियो ऑफ करोतु यदा सम्भवति। महोदय अहं वीडियो आफ् करोमि महोदय। अत्र चिन्ता मास्तु, कार्यालये अनुमतिं नास्ति अतः। चिन्ता मास्तु भगिनि। महोदय प्रार्थनया वयम् आरम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिः प्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषां पुनः स्वागतं करोमि। अद्य नमस्ते महोदय। अस्माकं व्याकरणवर्गस्य अष्टमवर्गः भवति। एतावत्पर्यन्तं वर्णानां प्रभेदाः अस्माभिः दृष्टाः। माहेश्वरसूत्राणाम् अभ्यासः अपि अस्माभिः क्रियते। तेभ्यः निष्पन्नाः ये प्रत्याहाराः तेषामपि अभ्यासः वयं कृतवन्तः। तथा इत्संज्ञा प्रकरणं दृष्टवन्तः। पुनः तस्मात् अनन्तरं सत्त्वादि कार्याणि अपि दृष्टवन्तः। सत्त्वादिकार्याणि सत्त्व आदि कार्याणि। गतवर्गे केनापि मां पृष्टं सत्त्वादि इत्युक्ते किम्? सत्त्व कार्यम् आदि येषां ते सत्त्व इत्युक्ते किं? सकारादेश। मूर्धन्यषकारस्य सकारादेश, दन्तसकारादेश। चत्वारि कार्याणि तस्मिन् तेषु प्रथमं सत्त्वं कार्यं। यतोहि सत्त्व इत्युक्ते सत्त्वं कार्यम् आदि येषां ते सत्त्वादि कार्याणि। बहुव्रीहि समासः। अस्तु, इदानीं यथा वयं कुर्मः माहेश्वरसूत्रेभ्यः अस्माकं वर्गस्य आरम्भं कुर्मः। कोऽपि वक्तुमिच्छति वा? सूत्राणां वदामि वा? अन्येभ्यः अपि अवसरं वयं दद्मः। वन्दना भगिनी वदति वा सूत्राणि? महोदय, महेश्वर सूत्र मेरे लिए खूब एडवांस है। मैंने फक्त सिर्फ प्रवेशः परीक्षां दत्तवती। अद्य भवत्याः प्रथमं वर्गः अस्ति वा? न, थर्ड। अस्तु, चिन्ता मास्तु। सत्या भगिनी भवती वक्तुं शक्नोति वा? आं महोदय। ऐ उन् रुलुक् ए ओम् ऐ औच् हयवरट् यमङ्गणनं गडदश् जबगडदश्। पुनः एकवारं। हयवरट्, तदनन्तरं हयवरट् लण् यमङ्गणनं गडदश् यमङ्गणनं जबैन् गडदश् जबगडदश् कपचटत चटतौ कपै शससर् हल्।
उत्तमम् उत्तमम्। ओंकार महोदय, झल् प्रत्याहारे के वर्णाः भवन्ति? अनम्यूट भूत्वा वदतु। आम महोदय, झल प्रत्याहार। हाँ, जल च जल च ज झ। चल जबै घड़ घड़दश। वर्णः मया उक्तं, सूत्रं न। वर्णः यदा वयं वदामः चेत् अन्तिमवर्णस्य इत्संज्ञा भवति खलु, तर्हि तस्य ग्रहणं न क्रियते। आम् तर्हि झभञ् तस्मिन् सूत्रे झ भ एव ग्रहणं भवति। जब घ ढ धश ग जब घड़ घ ढ ध ज ब ग ड ध ख फ छ ठ थ थ च ट त कप श स स ह। उत्तम उत्तम। इदानीं यदा अहं वदामि यत् झल् प्रत्याहारे वर्गस्य के वर्णाः भवन्ति? या तृतीया वा द्वितीया वा पञ्चमा वा? पंचम विहाय प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ श श स र। पुष्माणम्। उत्तमं, धन्यवादः। दीपक महोदय, खर् प्रत्याहारे के वर्णाः भवन्ति? किं? खर् प्रत्याहार। ख फ छ ठ थ च ट त कप श स स हल। खर् खर न हल् मया न उक्तम्। हल हयवर न न न न, प्रश्नः शृणोतु कृपया। प्रश्नं मया किम् उक्तमासीत्? खर् प्रत्याहार के वर्णाः भवेयुः? ध्यानेन शृण्वन्तु, वदतु। ख फ छ ठ च ट त क प श स र श श स र श श स र इति र अन्तिम रकार न भवेत्। वर्णः हलन्त्यं सूत्रेण तस्य इत्संज्ञा भवति। परन्तु प्रत्याहार अस्ति न। तस्मात् अनन्तरम् इत्संज्ञा अस्माभिः अधीताः। इत्संज्ञाविषये तस्याः सूत्राणि कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? इत्संज्ञायाः सूत्राणि। पद्मावती भगिनी, धैर्यं धरतु कृपया, अहम् आह्वयामि, भवतीमपि आह्वयामि। सुजाता भगिनी, इत्संज्ञायाः सूत्राणि मनसि अस्ति वा? अन्ये कोऽपि साहाय्यं मा कुर्युः इति मम अपेक्षा। उपदेशे इत्युक्ते उपदेशे जनुनासिके इति प्रत्ययः आदेशः आगमः अस्ति। प्रत्ययस्य सर्वाणि सूत्राणि उपदेशे जनुनासिक इति प्रथमं सूत्रम्। द्वितीयस्तु सूत्र अस्ति वर्तिक इत् इर् इत् इर् इत्। कदा पठनीयम् इदं वार्तिकं? द्वितीयस्य सूत्रस्य अनन्तरं। हलन्तं
द्वितीयसूत्रस्य हलन्त तदनन्तरम् इर् इत् संज्ञा क्या? इरित् संज्ञा वाच्या हम्म। केन कारणेन वदतु इदानीं पश्यन्तु केन कारणेन मया उक्तं यत् द्वितीयस्य सूत्रस्य अनन्तरं वक्तव्यम् उपदेशे अवस्थायां हल् इत् संज्ञका भवति न? उपदेश अवस्थायां हल् इति संज्ञका भवन्ति परन्तु यदा इरित् संज्ञा अन्तिम। वाच्या हाँ। यदा भवती आदौ एव वदति तर्हि हलन्त्यं सूत्रं तस्मात् अनन्तरं भवति खलु वर्तिक प्रथम न? हाँ, आप सुनिए जैसे हलन्त्यम हम लोग ने सूत्र लिया हाँ। हलन्त्यम सूत्र क्या बोलता है अंतिम हल की इत संज्ञा होगी और उसका हाँ। लोप होगा हाँ। तो इर हम जब करते हैं तो हाँ। इर में एक इकार है वो स्वर है हाँ। जो अनुनासिक स्वर बोलते हैं और दूसरा आता है रेफ रेफ वो हल है हाँ। तो उसके हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा हो सकती है और अनुनासिक इकार की उपदेशे जनुनासिक इत से हो सकती है तो दो अलग अलग सूत्र न पढ़ करके हम लोग ने सिर्फ एक वार्तिक के द्वारा इर जैसे पद समूह है उसका वर्ण समूह को हम लोग इत संज्ञा कर दिया तो इरित जो है छिदिर हाँ। भिदिर ये जो धातु है वो हाँ। इरित धातु हो गई चुतिर हाँ हाँ इधर न हाँ। विभक्तौ तुस्मः न विभक्तौ तुस्मः इति तृतीयं हाँ तृतीयसूत्रमस्ति हम्म। तिङ् प्रत्ययः अस्ति सुप् प्रत्यय और तिङ् प्रत्यय परस्मैपदी आत्मनेपदी अष्टादश परस्मैपदी आत्मनेपदी नव सूत्र अस्ति और 21 तिङ् सुप् प्रत्यय एकविंशतिः एकविंशतिः प्रत्ययः प्रत्ययः तेषां तदनन्तरं तेषां का संज्ञा भवति सकारः मकारः न भवती इदानीमेव उक्तवती खलु एकविंशतिः सुप्रत्ययः तथा अष्टादश तिङ् प्रत्ययः एतेषां का संज्ञा भवति इत् संज्ञा ये दोनों ये जो हम लोग प्रत्यय बोले हैं सुप्रत्यय और तिङ् प्रत्यय को मिला करके क्या बोलते हैं उसकी दोनों की मिलकर के संज्ञा क्या हुई पाणि ने क्या दिया था आपने सूत्र क्या बोला अभी तृतीय सूत्र न विभक्तौ तुस्मः तो उसको विभक्ति संज्ञा दी गई है विभक्ति तो हाँ तो विभक्ति में जब ये विभक्ति का मतलब सुप और तिङ् प्रत्यय उसमें अंतिम सकार मकार और तवर्ग यदि अंतिम में है तो उसकी इत संज्ञा नहीं होगी न विभक्तौ तुस्मः अवगच्छति वा आमाम् इदानीं चतुर्थं सूत्रम् आदिडि तुडवः आदिर्गि टुडवः धातोः आदौ स्थितः टुडु तठडढण न भवति केवलं यप् अपि न इ टुडवः इ टु डु एतेषां त्रयाणां यदा इत्संज्ञा भवति यदा ते धातोः आदिस्थः भवन्ति तदनन्तरं इदानीम् अन्य कोऽपि वदति पद्मावती भगिनी वदतु आं महोदय इदानीं प्रत्ययस्य आगच्छति श प्रत्ययस्य फिफ्त् सूत्रमस्ति अनन्तरं चुटु अस्ति लशक्वतद्धिते अस्ति अनन्तरं तस्य लोपः
उत्तमम्। एवम् इदानीं एतेषां वाक्यं कुरु कृपया। आम् महोदय। शाप् प्रत्ययस्य प्रत्ययस्य आदौ स्थितस्य शकारस्य इत्संज्ञा भवति इति शाप् प्रत्ययस्य। चुटु प्रत्ययस्य आदौ विद्यमाने चवर्गस्य टवर्गस्य इत्संज्ञा भवति इति चुटु। उत्तमम्। लषक्वतद्धिते लकारस्य शकारस्य कवर्गस्य इत्संज्ञा भवति अतद्धित तद्धित विहाय कृदन्तप्रत्ययेषु ला वा कवर्गस्य इत्संज्ञा भवति। कुत्र स्थितः? आदौ स्थितः। आदिस्थितः लकारस्य तालव्यषकारस्य तथा तालव्यषकारस्य कवर्गस्य इत्संज्ञा भवति। अनन्तरम् अन्तिमसूत्रमस्ति तस्य लोपः। एतेषु सर्वेषु सूत्रेषु ये इत्संज्ञकवर्णाः सन्ति तेषां लोपः भवति इति तस्य लोपः। उत्तमम् उत्तमं भगिनि। सर्वे अवगच्छन्ति वा? एतेषु कोऽपि सन्देहः नास्ति खलु? महोदय अस्ति महोदय। अत्र आदिर्नि टुडवः इति सूत्रमध्ये ञि टु इति एक अक्षरं तत् वर्गं टवर्गं टवर्ग नास्ति, अत्र केवलं टु तथा डु वर्णद्वयम्। ओके, देन् सिक्स्त् सूत्रमध्ये चुटु इति अस्ति, तत्र संपूर्ण टवर्ग स्वीकर्तव्यम्। Why here we are taking chavargam? In that case, we are taking only one letter. No, we are not taking. Panini is taken. Panini is taken. So, यथा स किमपि वक्तुम् इच्छति केवलम् एकं वर्णं कथा कुत्र स्वीकर्तव्यम् अथवा कुचुटुतुकु उदित् इति स्वीकर्तव्यं, स पाणिनि एव तस्य निर्धारणं करोति। एतेन कारणेन चु अथवा चुटु इत्यस्मिन् चवर्गस्य टवर्गस्य ग्रहणं क्रियते, परन्तु आदिर्निङ् टुडवः एतेषां केवल चु तथा टु इति वर्णद्वयस्य तत्र ग्रहणं क्रियते। केवलं चकार नास्ति, अत्र ध्यानेन पश्यन्तु। चु इति अस्ति, टु इति अस्ति। यतोहि ये धातवः सन्ति तेषाम् आदि च इति नास्ति। यथा डुक्रीयकरणे यदा वयं धातुं स्वीकुर्मः तत्र डु इति अस्ति, ड इति नास्ति। पुनश्च ईमिदा तत्र ञकार नास्ति, ईकार अस्ति, केवल ई अस्ति। ई टु डु, टु नदी, टु नदी, टनदी नास्ति, तो टु इत्यस्य वर्णस्य एव इत्संज्ञा भवति। अत्र कंठस्थीकरणं कर्तव्यं, मनसि अपि स्थापनीयं। यत्र अस्मिन् सूत्रे संपूर्णवर्गस्य ग्रहणं न क्रियते। तेन कारणेन यदा यदा भवती पश्यति चेत् चु तथा टु वर्गद्वयं चवर्गे एव भवति, टवर्गे एव भवति खलु। आदौ टुडु आदिर् टुडवः टवर्गे एव टकार अपि भवति, डकार अपि भवति। तथा पाणिनि केवलं टवर्ग स्वीकर्तुम् इच्छति चेत् टु एव लेखितुं शक्नोति। डु केन कारणेन तेन उक्तम्। अनेन अस्माभिः ज्ञातव्यं यत् केवलं टु तथा डु इत्यस्यैव ग्रहणं करणीयम्। अस्तु। One more doubt, Mahodaya. Last class मध्ये भवानी भगिनी
अपि उक्तवती पठति पठतः पठन्ति तिप्तस्जि इति सुप्रत्यय पठति अत्र तिप् इति पकारं लोपः भवति खलु महोदय कुत्र पकारस्य लोपो भवति? तिप् मध्ये पट् प्लस आ is a vikarna pratyaya शप् and ti is the ting pratyaya. Okay, then तिप् इत्यस्य पकारस्य इत्संज्ञा भवति। इत्संज्ञा भवति. Then second one द्विवचने why it is a visargam there patatah iti केन tiptas कारणेन ध्यानेन शृण्वन्तु न विभक्तौ तुस्माः न विभक्तौ तुस्माः यतोहि तिप्तस्झि सकारान्ते विद्यते खलु मिप् वस्मस् सिप्तस्थ सकारान्ते अस्ति यतोहि ते विभक्ति प्रत्ययाः सन्ति तस्य दन्तसकारस्य संज्ञा न करणीया। अहं 3 वर्गेषु न आगतवती महोदय अहं जानामि केवलं भवती न ध्वनिमुद्रा आगतवती। एव शृणोति अतः पठन्ति एतेषां इति रूपं कथं भवति महोदय पठन्ति इंति रूपाणि तस्य प्रक्रिया वयम् अग्रिमं कक्षायां यदा सम्भवति चेत् पश्यामः। मया उक्तम् आसीत् केवलं म्यूट् भवन्तु कृपया। पठ इति धातु अस्ति पठ इति भवादिगणे एव अस्ति इति मन्ये। भवादिगणस्य धातु तर्हि पठ अधिकं शप् इति विकरणप्रत्यय तथा तिप् इति अत्र तिप्तस्झि झि इति प्रत्यय भवति पठन्ति। अनन्तरं झि इत्यस्य झो अन्त इति सूत्रेण अन्त इति आदेशः भवति। तो झि that jha will be converted to ant. So what is the pratyaya here? Zhi. So it will be anti. So now what we have now is pat adhikam a adhikam anti. Right now we are seeing a and anti. एतयोः मध्ये केन कारणेन तस्य सवर्ण दीर्घसन्धिः न भवति? अस्य अतो गुणे इति एकः सूत्रमस्ति। यदा तस्य अकारद्वयं विद्यते तेषु केवलम् एकमेव अकार तिष्ठति एकस्य लोपः भवति। अतः पठ तथा अ प्लस अन्ति अनन पठ केवलं तस्य अकारस्य लोप भूत्वा पठन्ति इति रूपं सिद्ध्यति। Out of the two akara, one will stay, and so there will be an adesha of akara in place of both the akara. Rather, I would say that. Okay. So patha, that is the shap, have also an akara, and anti has also an akara. So both the akarasya sthane ekam eva akarah adesha bhavati. Ato gune iti sutram. परंतु पठ हलंत असते ना ठ. हाँ, that is why patha plus shap plus tip plus शप का अ बचेगा। हाँ, ओके ओके। अभी हम लोग प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं तो उसका अभी आप टेंशन मत लीजिए। बीच बीच में मैं ऐसे समझाते जा रहा हूँ। यदि मुझे समझाना होता तो मैं आपको लिख करके समझाता कैसे होता है। आप सुन रही, खास सिर्फ सुनिए आप। केवलं शृण्वन्तु सर्वे। यदा यदा संभवति मध्ये मध्ये अहं वक्ष्यामि, परन्तु यथा वयं प्रक्रियायाः आरम्भं कुर्मः सम्यक् रीत्या वयं पठिष्यामः, चिन्ता मास्तु। तस्मात् अनन्तरं दीपक महोदय, भवान् इत्संज्ञायाः सूत्राणि जानन्ति खलु? हाँ, कृपया बोधयन्तु कृपया।
अन्म्यूट् भवतु कृपया, अन्म्यूट् भवतु। उपदेशे जनुनासिकीत् हलन्त्यं वार्तिकसूत्र वार्तिकसूत्रं यादनस्ति इरित् संज्ञावाच्या न विभक्तौ स्मः आदिर्युटुडवः दशक तद्धिते आदिर्युटुडवः तस्मात् अनन्तरं चुटु तस्मात् पूर्वं आदिर्युटुडवः तदनन्तरम् अस्ति प्रत्ययस्य किं प्रत्ययस्य प्रत्ययस्य शः न शः प्रत्ययस्य, दिस् इस् द सूत्रं, शः प्रत्ययस्य अनन्तरं लशक्व तद्धिते नो पुनः एकवारं लशक्व तद्धिते तस्य लशक्व तद्धिते तस्य लोपः। उत्तमम्। लशक्व तद्धिते इत्युक्ते किं महोदय? यदा यदा धातु प्रथम पदम श अस्ति किंवा क अस्ति क वर्ग हु वर्ग तस्य लोपः भवति। धातौ भवति वा? धातौ भवति वा? तद्धिते नास्ति परन्तु धातवे तद्धित इत्युक्ते किं? तद्धिते किमिति? तद्धिते इत्युक्ते किं? नाम प्रत्यय। This sutra is not applicable to dhatu. केवलं प्रत्ययस्य, चत्वारि सूत्राणि केवल प्रत्ययानां कृते एव भवति। शः प्रत्ययस्य चुटु लशक्व तद्धिते तस्य लोपः केवलं प्रत्ययेषु एव विधीयन्ते। वन्दना भगिनी अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? शक्नोति वा? कुत्रापि संशयः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु। किंचित किंचित समझ में आ रहा है। धीमे धीमे शनैः आ जाएगा समझ में, चिंता मत करिए। शृण्वन्तु अवगतम्। महोदय गम्लृ धातु इति एकवारं विवरणं ददातु महोदय। अत्र लृ इति इत्संज्ञा भवति, मकारम् अनुनासिक लकार अस्ति, तत्र इत् संज्ञा भूत्वा गम् इति शिष्यते, अवशिष्यते खलु। लकार एव गच्छति, केवल गम् इति अवशिष्यते। Okay, but here we are not taking that halantyam makaram. No, once you are once you are done, completely done with that thing, once you are done the itsanya, okay, that it doesn't, that the particular dhatu or pratyaya does not stay as an upadesha avasthayam. We are doing the itsanya only in case of upadesha avastha. Once you are done the work, it is no longer in the upadesha avastha, so we cannot do any further deduction. Otherwise if you say patha iti dhatu asti, तर्हि अधुनासिक अकारस्य इत्संज्ञा कुतः पठ इति भवति। तत्र ठकार अपि अस्ति, तस्यापि हलन्तं सूत्रेण भवति, तर्हि केवल प इति अवशिष्यते इति तु नास्ति। Once it is done, that then is no longer an upadesh avastha. Okay? जी एक बार लशक्व तद्धिते फिर से बताएंगे। कौन बताएगा? अहं वदामि। दधित प्रत्यय विहाय आदौ विद्यमानः लकारः शकारः कवर्गः च इत्संज्ञा भवति। तो ल श का इत्संज्ञा हो जाएगा क्या? हाँ, अच्छा, किसके कहाँ पर स्थित? प्रत्यय के आदि, प्रत्यय के आदि में स्थित लकार, तालव्य शकार और कवर्ग के वर्ग वर्ण जो है
उसकी इत् संज्ञा होगी। ठीक, धन्यवाद। समातनन्तरम् अस्माभिः 4 कार्याणि पठितवन्तः। तेषां सूत्राणि मनसि सन्ति वा? आम् महोदय। वदतु। धात्वादेः शः सः नोः नः and इतितो नुम् धातोः and उपधायां च। उत्तमम्। उभधायां च। इदानीं भगिनी प्रथमं सूत्रं बोधयतु कृपया। अहमेव महोदय। क वदति? पद्मावती भगिनी वा? वदामि न वा महोदय? न न न, एक मिनिट्। प्रथमं सूत्रं सत्या भगिनी वदति। अस्तु। ओके। औपदेशिक रूपे षकारः सकारादेशः भवति। धात्वादेश सकारस्य स्थाने षकारस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति। तत्तु सम्यक्, परन्तु तस्य कारणं किं? केन कारणेन पाणिनिना कृता एतादृशा शब्दाः वा एतादृशाः धातवः? यदा सकारः एव करणीयः आसीत्, सकारे एव भवेत्। आदौ केन कारणेन षकारः क्रियते? यदा स्था इति धातुः अस्ति तर्हि ष्ठा केन कारणेन उक्तं? स्था एव भवेत्। शोपदेश धातु इति कारणेन। परन्तु तस्य प्रयोजनं किम्? न जानामि महोदय। लक्ष्मी भगिनी वक्तुं शक्नोति वा? अन्म्यूट् भूत्वा वदतु। महोदय, अव्यवदायकरूपेण भवति इति कारणेन षकारः सकारः आदेशः भवति। नो, तस्य लक्ष्मी भगिनी आदौ वदतु। प्रयोजनं किम् इति प्रश्नः। शोपदेशस्य कः प्रयोजनं? किं प्रयोजनं? शोपदेशस्य अहं वदामि महोदय। एकनिमिषं प्रयत्नं करोतु भगिनि। मया एकम् उदाहरणरूपेण अपि 3-4 उदाहरणानि मया दत्तानि। आं महोदय। वाक्षु तथा लतासु तथा पठिष्यति एतादृशानि उदाहरणानि मया दत्तानि खलु? आं महोदय। वाक्षु शब्दः सप्तम्यां वाक् अधिकं सुप् इति प्रत्ययः सप्तमी बहुवचने आगच्छति। प्रकरण किं कथं वक्तव्यम् इति न जानामि। आङ्ग्लभाषायां वदतु यदा शक्नोति चेत्। सूत्रमस्ति आदेशप्रत्ययोः। आदेशप्रत्ययोः इनको प्रत्ययोः इनको धातुयो इत्युक्ते इन् प्रत्ययाः प्रत्याहारः कावर्गः
तस्मात् अनन्तरं कवर्गः अस्ति कवर्गः वर्णाः अस्ति इन् प्रत्ययस्य आदेशप्रत्ययोः इति उच्यते सकार शृणोतु, ध्यानेन शृण्वन्तु। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? ओङ्कार महोदय, भवान् वक्तुम् इच्छति खलु? आं महोदय। इन् इति प्रत्ययस्य प्रत्याहार इन् प्रत्याहार इत्यत्र णकारस्य ग्रहणं भवति। इन् प्रत्याहारे एवमेव कु इत्यनेन कवर्गीयाणां ग्रहणं भवति। वाक् शब्दस्य सप्तमी न, तस्मिन् आदेशप्रत्ययोः एतस्य सकारस्य षकार कथं भवति? इत्यनेन तस्य मूर्धन्यः शकारः केन कारणेन मूर्धन्य आदेशः अस्ति? सामान्यसकारस्य न, आदेशस्य सकारस्य मूर्धन्य आदेशः भवति खलु। यथा प्रत्ययस्य यदि कोऽपि अवयवः अस्ति, that's part of a pratyaya, or that adeshasya sakarah. What Panini has done, the original, for example, dhatu was tha, he converted into shtha, then he made an adesha to convert that murdhanya sakar into danta sakar. So that sakar is called adeshasya sakara. So only those sakara which are adeshasya sakara, or like a san pratyaya यदा वयं योजयामः तद् नकारस्य लोप् भवति, केवलं स इति अवशिष्यते खलु। तर्हि पि पठिष्यति इति यदा रूपं स्वीकुर्मः तत्र पि पठिष्यति इति अस्ति खलु, मूर्धन्यषकारः अस्ति। तर्हि अस्माकं कृते सन् इति प्रत्याहार केवलं सकार एव विद्यते, अस्माकं समीपे केवलं सकार अस्ति, परन्तु इनको आदेशप्रत्ययोः केवलं प्रत्ययस्य अव्ययः अस्ति, the part of a pratyaya. That sakara will be converted to murdhanya sakara, and adeshasya sakara will be converted to murdhanya sakara. So that is why he converted all this, the danta sakara dhatu or pratyaya into that murdhanya sakara, then again gave the sakara adesha. So that is why we are doing in Sananta also, San Pratyaya becomes Shakara. Yeah. San Pratyaya will be Shakara, pi patishati, lilekishati. अस्ति चेत आप बोले ना लता अस्ति चेत इनको हो सूत्रम भवति, और इन प्रत्याहारे परे अथवा कवर्ग वर्णे परे यदा आदेशस्य सकारः अथवा प्रत्ययस्य अवयव रूपेण विद्यमान सकारः अस्ति तर्हि तस्य सकारस्य मूर्धन्य आदेशः भवति। इनको इण इत्युक्ते इ ऐ उण, तस्मात् इ आरभ्य लण् प्रत्यय तस्य णकार पर्यन्तम्, अण इति ऐ उ उण न, लण् पर्यन्तम्। Okay, just to make that, he wanted to make that murdhanya shakara, he used the dhatus in the form of murdhanya shakara again and converted to shakara to make it adesha sakara. But there are some rules, exceptions. What are the exceptions? Can anyone tell me? Like Omkar Mahoday? Rule Mahodaya, Natva, Takaram, and Nam dhatu, Sub dhatu. Nam dhatu.
नाम धातु विषये इदं सूत्रं न प्रवर्तते। यथा षण्मुख इव आचरति, षण्मुखायते। सो दट् षण्मुखाय इति धातु भवति, तस्य सन्मुखाय न भवति, तत्र षकार एव तिष्ठति। पुनः धातुद्वयं श्वश्क तथा ष्ठिवु, एतयोः मूर्धन्यषकार एव भवति, दन्तसकार न भवति। ष्ठिवु टु स्पिट, and so that will be said as Sthivati. And Shvashkate, Shvashkete, Ashashkvata, that is the Rupam. Two dhatus are an exception, and along with the Nam dhatus. Nam dhatus are obtained by, can anyone tell me, how do we get the Nam dhatus? Which pratyayas to be added to Nama? Subandha. Kyang pratyaya. Dhatu. Kyang pratyaya. Dhatu. No, all that is called Sanadi pratyaya. Sanadi pratyaya, there are 12 Sanadi pratyayas. When we are out of 12 Sanadi pratyayas, some are used with dhatu, some are used with noun. But all, whether it is used with, whether they are used with dhatu or a noun, they always give a new dhatu. Right? For example, Putram Atmanam Ichchati. One who desires son for himself. That is a kyach pratyaya. Putra plus kyach. Putriya iti dhatu bhavati. Now putriya and then ti. Putriyati. Saha putriyati. He wants a son for himself. Saha putriyati. And similarly, then kyanga pratyaya. Like he acts like something else, someone else. So a kakaha acts like, what you say, kite or something. Shenayate. Kakaha shenayate. That is a power of the Sanskritam. He can express in English like he acts like an eagle, or he acts like a kite. But he here just one word, shenayate, and our work is done. Brevity of the language. So, एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः अधीतं। पुनः अणोनः यथा षकारादेशः सकारादेशः करणीयः। अणकार धातोः आदि यदा अणकार विद्यते तस्य नकारः भवति। पूर्वस्मिन् सूत्रे यदा षकारे परे यदा टकार ठकार भवति चेत् तस्य तकार थकार भवति। So we are doing the reverse of Shtutva Sandhi. The original dhatu was tha. Panini has done sakarasya murdhana shakara, and accordingly the Shtutvam shoots in. So now we are reversing, so the Shtutvam is no longer required. So that get the original form, like stha. Tha will be converted to tha, and ta will be converted to ta. Ta will be to takar. Okay, this is the thing. Second, anonah. Anakarya dhatavah ana adau vidyamana asti tasya nakarah bhavati. Dashopadeshaha dhatavah santi ete drashaha dhatavah anopadeshaha bhavanti. Anopadeshaha tasya anakarasya nakarah bhavati. यथा एकम् उदाहरणं मया दत्तम्। अणकारयति आत्मान नकार अणकारम् आत्मानम् इच्छति क्यच् प्रत्यय। अणकार अधिकं क्यच् अणकारयति इति धातु अणकार्य इति धातु ति इति प्रत्यय। अणकारयति पद्मावती भगिन्या उक्तं पृष्टमासीत् तस्मिन् गतवर्गे। अणकारयति, सो आत्मानम् अणकारम् इच्छति। That a particular word wants anakara for himself, for itself. So anakarayati. So for that, nam dhatu here also will not get this.
सूत्रस्य प्रसक्तिः. It is not applicable for nam dhatu here also. Then idito num dhatoh, idito num dhatoh. उषा भगिनी वक्तुं शक्नोति वा? इदितो नुम् धातोः. Whenever there is a when there is a it sanya of e, then you get num in that place. Which in place? place of e. Yeah. Which place? When the e goes off, then you insert a num there. No. I give you an example. Vadi iti dhatu. Vadi. Oh, then na is inserted, not num. Na is inserted. It becomes No. one. I am not asking. See, what you have done is correct. I am just trying to explain where it is inserted. So you said ikara goes and nakara is inserted in place of ikara. Please mind here that dakare pare ikara asit khalu. Va, the, e. So if Yes, it it has is to come nakara, before. There was a sutram for it. I don't remember that. no, I am not That- asking for the sutram. Just आप जो मैंने आपको सुना, आपको जो आप बोली, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं. जैसे आपने कहा कि इकार की इच संज्ञा हुई और उसके स्थान पर नकार आया, नुमागम हुआ, तो आप वदी धातु आप लीजिए, व, अ, द, ई, इसका अनुपूर्वी हुआ. Ikari is at the end, but we are putting nakara in between, before the dakar. Vand. अच्च अनन्तरं महोदय अच् अन्त्ये. मिदतोन्त्यात् परः आगमः अस्ति. मित् आगमः. नुमागम मकारस्य संज्ञा भवति यत्र मित् इति भवति. मिदचोन्त्यात् परः आगमः. आगमः द्विविधाः, टित्, कित् तथा मित्, त्रिविधाः. तो आद्यन्तौ टकितौ, आदि टित्, अन्ते कित्, मित्, अन्तिम अचः परे. यदा पठ वद अस्ति अत्र इत् संज्ञा भूत्वा वद इति अवशिष्यते खलु. इदानीं तस्य आनुपूर्वी वयं कुर्मः. तत् व, अ, द इति शिष्यते खलु. व, अ, द. एकमेव अच अस्ति अस्मिन् धातौ. तस्मात् अनन्तरम् एव नुमागम भवति. अन्तिम अचः परे. व, अ, नुमागम द. व, अ, द, वन्द. Yes. Understood. Yeah. But I just need those three sutrams. Midachon tyat parah. That is before the. No, not before. After the last ach. Yes, not before. After the last ach. If there is an ekach dhatu, it can't. Ekach have only one dhatu or one ach. Whether it can be either or previously, or there is only one. If there is an anekach dhatu, if there are more than one acha, then it will be at the end of the dhatu, at the end of the antim acha. Okay. After. And what was the other one? The tit and the other two you said? There are three types of agama. Right? Tit agama, where is that it sangya of T. Ut kurmaha khalu. Yeah. Then sutagamaha. यदा वयं संस्कृतम् इति शब्दं पश्यामः तर्हि सम् इति उपसर्गेण सह कृ धातुः अस्ति तथा ल्युट् प्रत्ययः अस्ति संस्कृतम्. इदानीं सुडागमः भवति, सकारस्य आगमः भवति. सुडागमः, द सुट् इति आगमः. मार्क् मै वर्ड्, सुट् इति आगमः टकार अन्ते अस्ति. तस्य टकारस्य इत् संज्ञा भवति. कीदृशः आदेशः? इदानीं टित् आदेशः. यस्य टकारस्य इत् संज्ञा भवति ते टित् इति कथ्यन्ते खलु. So when it is tit, it comes before
the placement to whichever it is ordered. Here, kit agama has been given to the kru dhatu. So just put that sam and sa and kru. Samskrutam. अवगच्छन्ति वा? उच्चारण संस्कृतमिति खलु नास्ति. देखिए, there is a difference because of in Uttar Pradesh we use Sanskritam. Nakarasya uchcharanam kurmah Sanskritam. But in the Dakshinatyaha te Samskritam ichi uchcharanam kurvanti. Samskritam. Sama upsarga to asti eva. Tasmin kapi shanka nasti. परंतु तस्य अनुस्वारः कथं वक्तव्यम् अनुस्वारस्य उच्चारणं कथं भवेत् सम. But sometimes by default we can either be called samskrutam or sanskrutam, but actually it should be samskrutam. परंतु महोदय अनुस्वारस्य यही परसवर्णे स इति परस्वर्ण नास्ति अतः अनुस्वार एव भवति. अनुस्वार उच्चारणं अनुस्वार एव करणीयं संस्कृतं. पर यदा वयं सम यदा वदामः तस्मात् अनन्तरम् अस्माकम् ओष्ठः बध्नः भवन्ति खलु. We are closing the lips, so we need something to open up our lip. Samskrutam. If we close it, it can be either sun or sam. It has to be sun, not sun. Sam. But like if I say sam, actually it is an anuswar, sam or sm, whatever you say. It depends on where we speak. But original what? Original is if I say I have to just sam, that is sa. Kevalam sa. Sa. This is the anuswarasya uchcharanam. Kevalam It is neither na, neither ma. Kevalam It is the uchcharanam. Kevalam nasikayah upyogah bhavati. What we are trying to do is anunasika uchcharanam. There is a difference between anuswara and anunasika. Anunasika is the savarna vargya or the panchama varga. Like for kavarga, that is a gakara, chavarga, nyakara, tavarga, ankara. Parantu yatra savarna varna nasti. यदा त्रयः षकारः हकारः कथं तस्य उच्चारणं करणीयम् एतेषां कृते बताइए. कभी वो ऐसे भी मैंने पढ़ा है, बोलते हैं कि जब मुंह को सबसे गोलाई में सबसे छोटा कर दें, तो जब हम गोलाई में करेंगे तो वो न, जैसे आपने कहा, न होगा न म होगा, तो वो संस्कृतम हो जाएगा. तो कोई वो सही उच्चारण तो वही है. अब देखिए, मैं मराठी का बात कर रहा हूँ. वो लोग सम बोलते हैं. हम लोग गुजराती लोग हैं, वो सम बोलते हैं. और शायद नॉर्थ इंडिया में भी सम ही बोलते होंगे. साउथ इंडिया में सम बोलते हैं, संस्कृतम. नॉर्थ इंडिया में संस्कृतम, बट एक्चुअली सम. हाँ, एक्चुअली वो है, लेकिन रीजन वाइज क्योंकि आदत नहीं है वैसे बोलने की, तो एक ना एक कोई प्रथा चल पड़ती है, फिर सब लोग उस प्रांत के वैसे ही बोलते हैं. अस्तु. इदानीं केन कारणेन सर्वैः वीडियो न उद्घाटयन्ति? सर्वे उद्घाटयन्तु. अस्मासु संलापः अपि भवन्ति खलु. ये उद्घाटयितुं शक्नुवन्ति ते उद्घाटयन्तु. महोदय, that PDF मध्ये सेकृ सृप् इति एकवारम् एकाच धातु अस्ति खलु. एकवारं विवरणं ददातु महोदय. कदापि शोपदेशः न. So if you find that there are approximately 90 dhatus which are either shakaradi dhatu or danta sakaradi dhatu. So how do we know
whether they are Shopadesha or not Shopadesha. Right? It can be a Shopadesha, because if they are Shopadesha, then we can apply the rule of Adesha Pratyayoho and make it Murdhanya Shakara. But if we know that these are not Shopadesha Dhatu, for example, in that saying that Sekru Supasuru Surujastru Styai Kadapi Shopadesha Na. So these are exceptions. Although there are Sakaradi Dhatavaha, parantu te Shopadesha Na. So for them, that Shakaradesha will never happen. And But that Sut and Siddh, that is a different. Ekadaya Dhata. First, yeah, okay. Then gradually go one by one. You have the PDF with you. So what are out of the 90s? We are first segregating 7 dhatus which can never be Shopadesha. Okay, 7 gone. Then after that, we have a list of 6 dhatus which are always Shopadesha. Shwashka, Swida, Swad, Swanja, Swapa, Sming. Although they are starting with a Danta Sakara, they are Shopadesha Dhatava. So except for Shwashka, all other dhatus are starting with Danta Sakara. So, but they are Shopadesha Dhatava. Etan vihaya ye ekach Sakaradaya Shakaradaya va bhavati. Now then we are doing a final what you say, bifurcation. We have out of the 90, we have removed 30. For the remaining 77 dhatus, Sakare pare ach bhavati. There are 3 conditions. Sakare pare swara bhavati yada siddha sud, athva Sakare pare danta varna bhavanti, dantya varna tavargasya. Sthastu ete varnaha te shopadesha dhatavaha eva bhavanti. So for example, if we have a, if we take a dhatu called spa, for example, it may or may not be there. I'm just giving a fictional example. Spa, right? We have a stha, we have a spa, for example. So it is an ekach dhatu, but it doesn't have a danta vyanjana, and so it cannot be a what you call a Shopadesha dhatu, because it doesn't follow with a danta vyanjana. It doesn't have a danta vyanjana. Pakara is a oshtha vyanjana. Mahodaya, you told Sakare pare achiti bhavati ekacha dhatu iti, but Shopadeshu kadapi na atra sekru iti bhavati is plus ekaram tatrapi ach bhavati. No, this is exception. These are fixed Okay. non-Shopadesha dhatu. Okay, So okay. out Mahodaya. of the 77, whatever remaining, we have to bifurcate like this. So what Sekru, Supa, Sruj, etc. can never be Shopadesha dhatu. That Panini has already given the Karika for it. So it cannot be. Out of the remaining, after the 7, we have that 6 special dhatus which are always Shopadesha. Shopadesha dhatu. So now out of the, so out, if I give up, if we say deduct the 13 dhatus out of the 90 we have 77 approximately dhatus. 77 dhatus. For 77, we go this. If a Sakare pare ach bhavati, तथा Sakare pare dant vyanjan bhavati, te dhatavaha Shopadeshaha uchyante. Astu Mahodaya, धन्यवाद. णोनः इदितो नुम् धातुः यत्र नुमागम भूत्वा कस्मिंश्चित् समये यदा वन्द इत्यस्य प्रक्रिया अस्माभिः दृष्टा तत्र नकारस्य अनुस्वारः भवति नश्च अपदान्तस्य झलि अपदान्ते नकारस्य झलि परे झल् वर्ण परे अनुस्वारः भवति नश्च अपदान्तस्य झलि नः च
अपदान्तस्य नकारस्य स्थाने अनुस्वार भवति कदा भवति झल वर्णे परे. So if a nakara which is an apadanta followed by a jhal varna, that particular nakara will be converted to anuswara. Okay. For example, here in the Vanda, the dakara is the third letter of the varga. Okay. So it is a jhal varna. So here, what we have done is va, na, and the. So that nakara will be converted to anuswara. Vanda. Then there is again a scope for one more conversion. Anuswarasya yai parasavarne. If that particular nakara is followed, anuswara followed by a yaya varna, which is hakara vyaya sarve vyanjanani. So that will get, hakara and treshakara vyaya vyanjanani. So that will get a parasavarna adesha. All 25 vargiya vyanjanas which have a particular anunasika adesha. For example, kantha, kampa, kapi chalane iti dhatu, kapa iti idito num dhatoho nakarasya agamah kanpa iti bhavati, nakarasya anuswarah पुनः अनुस्वारस्य यही परसवर्णे तत्र मकार भवति पकारस्य अंतिम वर्ण पवर्गस्य. अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? दर्शयामि. आं महोदय, न महोदय, अवगतं महोदय. लैक् परसवर्ण गतवर्गे अस्माभिः पठितम्. एतेन कारणेन अहं किमपि शेर् न करोमि, यतोहि वयं सामान्य वार्तालापेन माध्यमेन वयं पठामः. अवगन्तुं शक्नुवन्ति सर्वे? अनुस्वारस्य यही परसवर्णे अकिचलने इति धातु अस्ति. अत्र इकारस्य संज्ञा भूत्वा अक इति अवशिष्यते. दोहि इदितो नुम् धातोः अनेन सूत्रेण नुमागम भवति. अन् क इति भवति अ न क. पुनः तस्य अनुस्वारस्य झलि परे नश्च अपदान्तस्य झलि इतेन सूत्रेण अनुस्वार भवति. पुनश्च अनुस्वारस्य ययि परसवर्णे इत्यनेन सूत्रेण पुनः पंचम वर्णादिष्ट. ओके, अवगन्तुं शक्नुवन्ति? This is a repetition. Parasavarna is optional only, Mahodaya. It's not compulsory. No, here in Padanta, when we are making a pada, it is compulsory. Into a different thing, if you are joining two padam, it's a different, is an optional. But here, for example, if you are making a pada, it is compulsory, except that when the pada is followed, there is some upasarga before the, like samskrutam. Here, it is some is an upsarga, and kru it is dhatu. We are adding that sum. So in case of sum, it can be either a sum or sum here. But we are having a sakarasya agamah. So that is why we are not doing the parasavarna here in Sanskritam. Lakshmi Bhagini, prashna asti na? Mahodaya, between, is it rule applicable for two words? Only in between the word. Which rule? Anuswarasya yai parasavarne rule. Yes, only apadante. Apadante. When we are making a word, when we are making a word, not the word is not yet complete. So we have not yet made a padam, either a subantam or tigantam. We are in the process of making a padam. Okay. So at that time, the nakara will also be converted into an anuswara if it is followed by a jhal varna. That is why I keep on asking the jhal varne ke varnaha bhavanti. Jhal pratyahare. Because it is a
विहाय झल झल प्रत्याहारे पञ्चमवर्ण वर्गस्य पञ्चमवर्णाः न भवन्ति केवलं खलु एतान् विहाय भवति द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण चतुर्थ प्रथम उष्माणः उष्माण अन्तस्थः अपि न भवति one more doubt Mahodaya, in PDF मध्ये shan shna shnih shnu 4 dhatus are there. Atra first one shan atra an pratyaya itsanya bhavati san iti bhavati, last one shan iti itsanya bhavati, both are same. कुत्र अस्ति णोनः मध्ये वा न महति धात्वादेशः सः सेकेंड पेज मध्ये पुटसंख्या 2 धातोः आदि शकार परः from the beginning second page मध्ये महोदय 4 dhatus are there. shan shna shnih क्षण संभक्तौ क्षणा शौचे स्नेह प्रीतौ क्षणोदाने अत्र first dhatu and last fourth one both are san pratyaya bhavati, both are they are same not san pratyaya, these are dhatus after the it sangya. Okay, so it sangya first what we have done anakare pare anunasik akar asti kshana so akaratse anunasik akarasya it sangya bhutva shan iti avashishyate खलु क्षण shana. This is a halant anakara now shan. So if we now adesha sha pratyayasya dhatvadehe shah saha, so then we are doing a shaka mudhanya shakarasya sakara. So as I told, whatever the tavargas will be there, what we had done the shtutvam, we have to revert the shtutvam to tavargas. So what anakara is the panchama varna of tavarga, we will converting to panchama varna of tavarga. So sun. Doubt still? Mahodaya, can't understand. Shakaram becomes sakaram and nakaram becomes nakaram. Yes, exactly. Oh. पश्यन्तु अत्र क्षणसम्भक्तौ इति धातु अस्ति अत्र आदौ णकारे परे अनुनासिक अकार अस्ति खलु तस्य इत् संज्ञा भवति उपदेशे जनुनासिक इत् then what is the roop remaining is shana. This is the roopam avashishyate. Okay, we are just doing this. We'll go step by step. Adau it sangya karaniya. So this step satvadi karyam comes after the it sangya. So first thing is the akara anunasik akara se it sangya. Now then secondly what the sutra says murdhanya shakarasya sakara. So we are doing sakara. Now there is an anakara here. The anakara came because we put the murdhanya shakara in the beginning to make the shtutvam. Now if there is no murdhanya shakara, why should we this anakara is also converted back to dantanakara. tavargasya nakara. Tavargasya nakara. Astu Mahodaya. It will be okay sun. Okay, here it follows the natvam rule, shakarasya pare natvam. Na shtutvam. There is no so here if there is a natvam there has to be a repah shakara and kavargam pavargam asti chet nakarah bhavati.
वदतु अत्र. न So atra न भगिनी shakara- So दोषः there is a difference thing. Here we are just दोषः doing the अस्ति shtut, we are saying the reversing the shtutvam. Oh, okay. The original dhatu was sun itself. Mm. He converted to murdhanya shakar, danta sakar he converted to murdhanya. It converted to murdhanya shakar. Now in conjunction with the murdhanya shakara, the nakara also converted to anakara. That is why it is shana. If you are reversing the shtutvam, it will again get back to the same thing, sun. Astu Mahodaya. Avagatam. Similarly, shna will become sna, shniha will become sni, shanu, and here also is sun, because atra anunasik ukarasya sanya asti, atra anunasik akarasya sanya asti. So final rupa of both the dhatu is sun, but the aupadeshik rupa is different. Astu Mahodaya. Dhanyavadalu. Similarly, because we have a da dhatu, there are two da dhatus, right? We have one have a yacha adesha, and one is a dadati rupam. One is a yachati, one is a dadati. So what one dhatu is called dudai dane, which belongs to the juhotyadi gana, third gana. It will get a dvitvam, and it will have a dadati iti rupam. And dana iti bhavadi ganasya dhatu. Even after that also, anakarasya sangya bhutva tatrapi da iti avashishyate. That bhavadiganasya dhatu will get the yachadesha, not the dudai one. So we have that common concept in mind that da sometimes have a yachadesha and sometimes not. This is the difference. There are two different dhatus. One is a dudai dane, which belongs to juhotyadi. One is a dana dane, meaning is the same, but they belongs to two different ganas, and accordingly that and first dana will get a yachadesha. Okay. अवगम्यते वा? आं महोदय. अन्य कोऽपि अपि वदतु. केवलं सा एव वदति, केवलं अन्य सर्वे तूष्णीं तिष्ठति. I wanted Mahodaya, I didn't attend the last 3 classes, Mahodaya. That's why I'm having so many doubts. No, it's a little complicated to understand. You'll have to go over it again and again. So that I am doing. Shannai. So that is what I am doing. This is the third class we are taking of the it sangya and Tatvadesha. Even then it doesn't reach. No, that is why I am here now, to make it reach there. I will add the Nich Pratyaya and to make it happen. Why won't it reach you? Astu. Idito num dhatu sarve avagantum shaknuvanti va? आं महोदय. अत्र पश्यन्तु, अत्र उदाहरणानि अपि दत्तानि. अत्र पश्यन्तु, अकिलक्षणे अंक नकारस्य आगमः, तत्र ककारः अस्ति. ककारस्य पंचम वर्ण अं, तो अंक इति अवशिष्यते. Here it is this called अनुस्वारस्य यही परसवर्णे, परसवर्ण भवति अनुस्वारस्य. भजी भाषायां भज धातु, भज again numagam become bhanja, because it is a jakara. That fifth letter of the cha varga is nya. So nakara will be converted to nyakara. Kunthi pratighate, kuntha, again nakarasya anakara. Tavarga. Chiti srutyam, here chinta, it doesn't change. Even after the anuswara, it comes back to the same chinta. There are some exceptions. Trasi bhashayam. Here, transa iti bhavati, anuswara bhavati.
अनुस्वारस्य यै परसवर्णे तत्र न प्राप्नोति, परन्तु झल् अस्ति, अनेन कारणेन अनुस्वार झ भवति नकारस्य। नश्च अपदान्तस्य झलि इति सूत्रेण झल् वर्णे परे अपदान्त नकारस्य अनुस्वारः भवति। सो त्रंस इति भवति, परन्तु सकारस्य तु कोऽपि सवर्ण नास्ति, तत्र अनुस्वार एव तिष्ठति। So it is applicable for all avargiya vyanjanas, Mahodaya. Yes, yes. Hakara. So here I have given hakara api asti atra, hakarasya api savarna nasti. So because it doesn't fall in the yai varna, because anuswarasya yai par savarne, यय वर्ण सति सवर्णे, यय प्रत्याहारे हकार न विद्यते। So yaya starts from hayavarat ka yakara ending with kapaya. It doesn't have shakara and hakara. So it has said it doesn't have a parsavarna. Ivi, here it's ivi. So ivi, the numagam bhavati, parantu nakara eva bhavati. Tasya vakara jhal madhye nasti. So nascha apadantasya jhali ityasya prasaktihi eva nasti atra. Because in vakara it does not fall under the jhal varna. Accordingly, nakara will stay. It doesn't change into anuswara. So in va iti rupam tishtati. अस्तु, एतावत् पर्यन्तं शङ्का नास्ति खलु? न महोदय। बुधायाञ्च तस्मिन् शङ्का अस्ति वा? कोऽपि वक्तुम् इच्छति, शक्नोति वा? सरलं सूत्रं? Last but one. किं करोति? Last but one? There are three conditions in the sutras. धातु, हाँ वदतु लक्ष्मी। हल, रेफ, वकार, ये एक निमिषं, लक्ष्मी भगिनी वदतु, वक्तुम् इच्छति वा? आं महोदय, प्रयासं करोमि। अन्तिमवर्णे हल् वर्णाः लास्ट् बट् वर्णे रेफः वा अकारः वा अस्ति। रेफ वा वकार? वकारः। तस्मात् पूर्वं यदि इक् वर्ण अस्ति चेत् इक् वर्णः दीर्घः भवति। उत्तमम्। सो हलन्त धातुः भवेत्, तस्मात् पूर्वम् उपधायां रकार वकार भवेत्। रकार नास्ति, न वक्तव्यं, रेफ वकार वक्तव्यं। तस्मात् पूर्वं यदा इक् वर्णः भवति, तस्य इक् वर्णस्य दीर्घादेशः भवति। यदा सूत्रं यदा वयं उदाहरणानि वयं पश्यामः, कुर्द इति धातुः अस्ति, तत्र पश्यन्तु, ककार क उ र द, कुर्द इति लिखितमस्ति अत्र। हलन्त्यम् अस्ति धातु, हलि अन्ते हल् अस्ति। दकार, तस्मात् पूर्वं रेफ, तस्मात् पूर्वं इक्, इ उ इक् वर्ण, तस्य इक् वर्णस्य दीर्घादेशः भवति, ऊर्द। So there is three essential conditions to be fulfilled. The dhatu should end with a consonant. In the upadha, there has to be either a refa or a vakara. And in the last but third last, as we say from here, it has to be an ik varna. That ik varna will be elongated or will be at a dirghadesha.
पूर्वी, पूर्व, पूर्व इति धातु फाइनल रूपम, मूर्छा, मूर्छ इति रूपम। રક્ષાબેન ઊંઘ આવશે તો કેવી રીતે ચાલશે? હું તો ભણાવ્યા કરું છું, બોલો. अस्तु, एतावत् पर्यन्तं कापि शङ्का नास्ति खलु? वयम् एकं नूतनं विषयं स्वीकुर्मः। अस्माभिः पूर्वमपि पठितं काश्चित् संज्ञाः विषये पुनः एकवारं तस्य what we say रिविजन कृत्वा काश्चित् नूतनसंज्ञाः वयं ज्ञास्यामः। आदौ सर्वे जानन्ति वृद्धिसंज्ञा। के वर्णाः सन्ति वृद्धिसंज्ञे? वृद्धिवर्णाः के सन्ति? आ ए ओ। आ ए न, I, I, out. I, आ, I, ऐ, औ. I, au. So see the sutram. What does sutram say? Vruddhi ad aich. Aich, ad tatha aich. I, au. So a, I, and au will be called vruddhi sangvarnaha. So if someone says or any sutra says that this varna will get a vruddhi adesha, so what are we supposed to do actually? So that particular varna will be converted in either three of this. Vruddhi ad, vruddhirad ad and h. Now here I have already explained the taparas tatkalasya when I had explained the pluta dirgha and hrasva swaraha. Tapara अस्माकं eka संज्ञा अथवा सूत्रमस्ति तपरस्तत्कालस्य इति. When we say that a, I, una have three varnas, a, I, and u, that all three varnas are representatives all 18 of their forms. Right? So hrasva, luta, dirgha, anunasika, ananunasika, उदात्त, स्वरित एवं अनुदात्त. So all 18 forms have these three a, I, and u will have. So when we say a, it means all 18 forms. But what if we want to say only hrasva akara or dirgha akara? For that purpose, Manini has given a sutra, taparas tatkalasya. Tapara karaniyaha. We say tapara. We are adding a ta after the particular varna. For example, if I want to say hrasva akara, I will add takara after a. So it will become at. Or if I want to say a, like here, vruddhir ad h, so I add a and ta, at. So they will fix my particular grahanam to dirgha akara eva, a. But what about r and dr? For example, if you are doing tapara tatkalasya, the guna will, we say, that will come into the guna one we say. So now you understand what is a tapara. If you want to say a particular hrasva or dirgha, we add a takara after the particular varna, like ata, uta, ita, ot. Okay. So here in the vruddhi varnaha, sutram said at h, at. So that means dirgha a and h, I and au. And similarly, the guna at, eng,
A, O. Eng pratyahar. Eng. A, O. So these are gun varnaha. If someone said there are adeng gunaha, there are sutram will kick the gun sandhi, adeng gunaha. Then we are doing a prakriya. There is a sutram will come as sarvadhatuk ardhadhatukayoho, which will make an adesha to the end varna of the ik varna to have an gunadesha. So, for example, in bhu dhatu, when we are making a prakriya of bhu to bhavati, the first thing, bhu plus shap plus tip, when shapa is there, it will make an adesha to bhu to make convert to bho, that o-kar. Then that bho plus a plus tip, then echoyavayavaha, bhava and ti. Then the bhavati will be the rupa. So here, guna will be a, and o. What about rakara? Because ikavarna api rakara api bhavati. Ik, I, u, ril, ri. So what if I want to say maha adhikam rishi, maharshi, right? Why we are adding, if I say guna, why we are adding ar here? Right? Ar and al, we are adding for the guna, right? Why? Because there is a sutram called urana raparaha. Uranaha aparaha. I'll write it down here. I think I had written. Urana raparaha. Can anyone tell what is U stands for? That actually it is Uhu Ana Raparaha. Uhu Ana sorry. Now, can you stand what is Uhu stands for? रुधातुस्य षष्ठी एकवचनम उहु. Not Ru Dhatu, Ru Varnasya. Because for example, if we say Pitru, Matru, that's a Shashti Vibhakti yes. Bhavati, Matuhu, Pituhu, Uhu. Shashti Sthane Yoge. Shashti Sthane Yoga, whatever the Adesha will be done in the place of Shashti Vibhakti. Uhu, atra Uhu, Ana Raparaha. When Aiu रपर के रपर होता अर् इर् उर् रेपसंगे अत्र तत्र महर्षि अत्र पश्यतु महा ऋषिः. So but we have to, because we have, when we are doing a guna sandhi, we cannot use any other, because we have to use the guna only, guna letter only. We have guna letter as a, and o. Okay? So if I say Maharshi, where does that ar come from? And here, because it is Maha plus Rushihi. So what we do, because he Rushihi Rashana Murdha, it is a Murdhanya Shabd Varnaha. And in all these A, and O, none of them are Murdhanya. So when we are doing a guna, then we take Maha at Akara, because the guna happens at both the place, right? Dvayoho sthane ekadesha bhavati. So we made A
converted to a. Because a is a guna, have a same savarna. So we can So convert to Dirgham converted into Rasvam. Because a will be converted to a will be converted to a. And the ana, when it means to, it will be converted to repha. Because repha and rakara are of the same murdha or murdhanya. The sthana will be the same. So that is the adesh, and the actual the guna will be ar. So maharshi. Same thing applies for case of vriddhi also. It will be R and ear. And depending on the situation, when a dhatu is getting an adesha that it has to be an rasva u or rasva e, so we'll do the guna as ir and ur, depending on the situation. But it always, that rakara will always have a urana rapara anena ar या ir or ur आदेश होगा. So you please keep this in mind. We just एतावत् पर्यन्तं संधि रूपेण वयं पश्यामः यत् अर् उर् आदेश भवति. केन कारणेन आदेश भवति एतदपि अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति खलु. So from the a, for example, in Maharshi, Maha Rishihi, from the a we have taken the a, because a is a savarna vachya. And from the rikara, we are converting rikara to repha, make it a savarna kanthas ucharana sthanam. So that will be ar. Okay. Avagamyate va? आम् महोदय. So guna, adeng gunaha, at and eng. Atta will be rasva akara, eng, a, and o. Sanyogaha, halo anantara sanyogaha. If there are two hal without any swara in between, it's called sanyogaha. Swarasya viramasya cha vyavadhanam vina uccaritanam vyanjananam samuhaha sanyogaha tinamna nyayate. Agni, तथा ग न अतयोः मध्ये संयोगः भवति. ज्ञानम्, तत्र जकार ञकार मध्ये संयोगः अस्ति. कृष्णः, तत्र षकार णकारयोः मध्ये संयोगः अस्ति. अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? This is the basic sanya. So we all know, but we are starting the sanya, so I am starting from the beginning, revising rather. Dhanyawad. So here dattva, there are two takaras, the, a, ta, va, and a. So that ta, and va, we have a sanyoga. Because these three varnas doesn't have any swara in between. No. प्रयत्नं सवर्ण भवन्तः सर्वे जानन्ति इति मन्ये. So I am not going to all this savarna and ucharana sthanam. I have already explained this. Sarva sanya. Now what Panini has done, he has not only given a sanya to a particular dhatu or a pratyaya, but he has covered to a group of pratyaya also. Here it is tau sat iti sanya asti. Shatru tata shanach pratyaya sat sanya prapnuvanti. So they both are classified as sat. Tau sat iti sutram. Tau shatru shanachau sat sanyo bhavataha. So they are combined called sat.
So these sanyas we need to understand, because Panini will continuously follow that sat 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 whenever he wants to do Shatru and Shanaj. Okay, he will not do Shatru Shanaj. He states only once sat sat tau sat. So now whatever he wants to tell about Shatru and Shanaj, he will just say sat. T. This is also a very important sanya. Acho antya adi T. Sir, महोदय सत्सन्या पुनरपि शत्रु और शानच प्रत्यय दोनों को मिलकर के उसको सत बोलते हैं सामने। जैसे निष्ठा संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा यहाँ पर है। कृता और तवतु प्रत्यय मिलकर के निष्ठा संज्ञा बोलते हैं। निष्ठा, ये दोनों का ग्रुप वो निष्ठा हो गया, उसका नाम दिया गया है निष्ठा। So whatever, whenever he wants to tell anything about Krita, Tavatu or Shatru Shanach and that Tarap Tamap, whatever the pratyaya, he will not do the complete pratyaya again and again. For the brevity, he has done similarly one letter sanya. Here it is sat, 2 letters, but here sometimes we have a gha, bhu, this type of similar sanyas, simple one letter sanya. Sat will be Shatru and Shanach are together known as Sat. Now, Acho Antyadi T. Acho, Achaha, Antim Ach, Antya Adi T. So, Antim Ach के बाद में जो भी होगा वो T संज्ञक होगा. It can be only Antim Ach or any Vyanjan following the Antim Ach. Here, Rama. How do we do the Anupurvi? Ra, ma, a. Atra Antim Ach asti Hrasvakara. Hrasvakara will be called T. Atra Manas iti rupam, Manas iti padam asti. Ma a, na, a, sa. Antim asti a. Tasmat param vyanjanam asti. So, the together us will be T sangya. The us will be T sangya. Pushpa. Pa u sha pa a. Antim varna a, antim ach. So a will be T. Ramam. Ma am iti. Am will be T. Nadi. E. Ikara will be T. Bhagini Sujata. Itasmin T sangyak varna ka bhavati. Lakshmi. Itasmin Dirghi. Keyura. Itasmin Akara. Akara. Akara will be T sangya. Now, Upadha, last but one letter. Alo Antyat Purva Upadha. Al, what is Al? Al Pratyahar. Can you tell me what is Al? What varnas are there in the Al? 14 pratyas. I won't look full sutras. What varnas are there? What varnas are there? Varna. All the varnas in the varna. All swaras and all vyanjanas are included in Al. Al. Acha and Hal combined to form Al. So, for last but one letters, Upadha is last but one. Alo Antyat Alah Purvam Upadha. Antim Varnat Purvam Vidyamanasya Varnasya Upadha Sanya Bhavati. Here it is Rama, Atra Ra'a Ma'a. Akara will be T Sanya and this Makara will be Upadha Sanya.
अवगच्छति वा? पेनल्टिमेट सर. पेनल्टिमेट, एक्साक्टली. पार्वती. So अत्र ईकार will be T and takara will be उपधा. उषा भगिनी, उषा इत्यस्मिन् उपधा तथा टी क्या के भवन्ति? शा अन्य कोऽपि न? उषा भगिनी. upada and a will be the T sanya. उत्तमम्. will be टी संज्ञा. इदानीं कामेश्वरी. कामेश्वरी महोदया वदतु. When I'm asking someone, please let him or her. पुनः एकवारं. Ra is upada, E is T sanya. When we say ra, it's called refa. Refa, okay. There are two pratyas to be added to the varnas. It's called if and kar. When we say akara, kakara, chakara, we give honor even to the varnas, the alphabets. We cannot say like here Mr. Nikunj, Miss Usha. We do say na in English. Here kakara, kar is a pratyaya to be added to the varna. And if is only pratyaya to be added to refa, to make it distinguish between r as a swara and ref as a vyanjana. If I say rakara, you will have a doubt in mind whether I am referring to the swara or a vyanjana. So for the vyanjana part, only ref, and for the r as a swara, rakar. So we will not have any doubt in the mind. रो उपदान. Kutra? रो कामेश्वरी, रो उपदान. रेपः उपदा. रेफ इति उपधा, ई इति टी. अत्र लक्ष्मी इत्यस्मिन् का उपधा का टी? लक्ष्मी भगिनी वदतु. Sha is upada, E is Ma is upudha. Lakshmi, how do you write murdhanya shakara kasha? Ksha is the kshi. So ksha, keval murdhanya shakara is the upudha. Murdhanya shakara is upadha, sha. And E is T sanya. T, uttamam. But ma will be the upada, no? Ma will be the upada, Mahodaya. E will be the T sanya. I got confused. Lakshmi Bhagini Swasya Namneva. Kshamyatam. Ma is upadha. Sir, is it ma or sir? Halant ma. Halant makar. Halant makar. And I have a doubt. When you say refa, it is a halanta ra, no? Yes. Okay. All vyanjanas are always halantyam, halantavarna, and all swaras are sampurna. That is why their matra kala, uchcharan kala is half matra. तो उपदा सब व्यंजन आते हैं क्या? कौन सा? लक्ष्मी में जरूरी नहीं है. उपदा टी में स्वर आते? नहीं, टी का मतलब हुआ अंतिम स्वर के बाद वाले जो व्यंजन स्वर जो भी है, अंतिम स्वर आ गया उसके बाद में यदि व्यंजन है तो व्यंजन भी वो उपधा में गिने जाएंगे. आम आम. ठीक है. लक्ष्मी सर फिर से कहिए. क्या बताऊं मैं फिर से? लक्ष्मी ई है वो टी है. हलंत म. हर म है उपधा. महोदय मकार है उपधा. उपधा में अगर संयोग आ गया तो लास्ट वर्ड ही लेना है अपना. लास्ट जो वर्ण है वही लेना है. महोदय हाँ, जैसे रेफ और रू था, एक हलंत्यम और एक वैसे रू और इसमें कैसे होगा? इसमें कुछ नहीं है. दोनों में ही लकार ही बोला जाता है, दोनों ही. और my guru Soumya Krishnapur states that it is not
Lr, LRI we use to swara. Lr, it is not lr, it is l only. सर It's a पितृ difference है तो क्या होगा? पितृ है तो ऋकार हुआ ना। हाँ पितृ अंतिम र है, आप उसका अनुपूर्वी करिए प ई त और रु, तो रू टी ऋकार वर्ग होगा उसका टी होगा, हाँ टी होगा ना, और तकार जो है उसकी हाँ उपधा हुई। उपधा, ओके। यहाँ सर स्वर और हलंत में लू मतलब ल और ल सेम ही है, उसमें कोई डिस्टेंस नहीं किया। लक्ष्मी में क्या हुआ? वो अंतर्जाल समस्या थी, सुनाई नहीं दिया मुझे। लक्ष्मी म में है, म हलंत म उपदा नहीं होगा क्या? म हलंत ही ई उपधा होगा, और ई जो लक्ष्मी है वो ई दीर्घ ई टी हो दीर्घ, गई, हाँ दीर्घ ई है, और वो टी हलंत है, म उपधा नहीं है क्या? वही है उपधा ही है म, हलंत म। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। अस्तु। समझ में आया सबको उपधा और टी? हाँ महोदय। ये उपधा समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बाद में जब हम लोग प्रक्रिया करेंगे तो उसमें उपधा का वन आएगा, उसको गुण करने का होगा। तब हम लोग दो सूत्र से गुण करते हैं, एक सार्वधातुक आर्ध धातुक यो हो, और दूसरा है पुगंत लघुपदस्य, लघु उपधा को गुण होगा। हमेशा एक वर्ण को ही गुण और वृद्धि आदेश होता है, और दूसरे कोई वर्ण को गुणादेश और वृद्धि आदेश नहीं होता है, केवल एक वर्ण को ही गुणा और वृद्धि होता है। ठीक है। Then Rishi Shah will be Upata, no? ऋषि, हाँ, श विल बी मूर्धन, शकार विल बी उपधा, and ikara will be t. And had it been it is Rishim, then im will be the t. अवगच्छति वा? So in Rishyam, if im is the T, he will be the Upada. ना 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 ना, Im is the t, उल्टा। then shakara will be the upada. Sakara will be the upada. So what Oh, in you the take Rishi? the im together. You take the im together. हाँ, then the shakara will stay, no? Oh, okay, The okay. No, I Halant was Shah. thinking of Halant Shah taking will only the Anuswara. Okay. Anuswara always comes with a Swara. No. So, No, so you have to see first. T is the antim acha pare. If there is only ach at the end, then the only ach will be the T. And if there is swara vyanjanan following that antim acha, that all together group will be called T. okay, okay. Okay, understood. And we have seen that example of manas, ma a, na a, and sa. Antime danta sakar asti. So that T will be us. तो ये धातु रूप या शब्द रूप किसी के लिए भी है या केवल? हाँ हाँ, किसी के भी लिए। उपधा मतलब क्या, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि उपधा लास्ट वन। कुछ भी सूत्र में होगा या कुछ भी बातचीत करने में भी बोलेंगे इसकी उपधा में क्या आता है। तो जैसे ओंकार है, आपकी उपधा में क्या आया, तो लास्ट में आपका र के बाद में अ है तो वो आपको टी हो गया, और रेफ है तो रेफ आपकी उपधा हो गई। ठीक है। ओके। अब त और तवतु प्रत्यय आर टुगेदर कॉल्ड निष्ठा. So when Panini wants to say ta and tavatu together, that this sort of work or this adesha to be made for ta and tavatu pratyaya, he will just use the word nishtha. Similarly, tarap and tamap pratyayas together are called gha. Tarap tamapau gha. This is a sutra. Tarap and tamap. We have to do the uchchatara, uchchatamaha. The dhita pratyayas are called gha. Understanding? अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आम् आं महोदय। लघु गुरु सर्वे जानन्ति वा अत्र? आं महोदय। आं सर। केवलं लघु गुरु स्वरे एव भवति खलु,
व्यञ्जनेन भवति. Here ka is followed by an akara. Ka is followed by rikara. So laghu and guru will be hrasva swaraha only will be laghu sangyakaha. If the varna is following by the hrasva swara, then that together will form a laghu varna. Here it is ka and sha and a. Kakara, murdhanya shakara and akara. So there are three letters joined together, but they are called hrasva because it is hrasva akara. Here ta, sakara, yakara and akara. So there are four letters. Sya, ta, takara, sakara, yakara तथा akara. So there are four letters called laghu. We have to find out what the word, what is the letter or what is the swara at the end. If it is there are dirgha swara, it will be guru. If there is hrasva swara, it will be laghu. Laghu. Excuse me, sir. Yeah. Sir, when we were taught Chandas, no, sir, they used to say that all the Samyukta Aksharas are gurus. So No, Ksha, after Gni that, and all are. Is that the same thing, sir, which you are telling? Yes, yes, The yes. laghu? yes. Then all the Samyukta. No. Sanyukta aksharas purva. If there is a laghu, it will be guru. Okay, sir. Right? For But example, this is to laksha. be considered laghu for the next one. Okay, sir. Yes, this will be a laghu for the next Ah. one, but the purva will be a guru. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Now here guru sarve dirgha plutaha anuswara visarga jihva muliya padmani sahita sanyog parakaha sanyog pare will be a guru. Laghavascha guru sangyakaha bhavanti. संयोग परकाः लघु अपि गुरु संज्ञका भवति. केवलं छन्दसि अत्र प्रयोगः एतेषां. तत्र पश्यतु मधु इति अस्ति. तत्र मकार इस् लघु एंड उकार अस्ति धु. ह्रस्व उकार अस्ति लघु. सीता सी दीर्घ इकार अस्ति तर्हि गुरु. ता आकार अस्ति तर्हि गुरु. रामः अत्र रा इति गुरु. अत्र विसर्ग अस्ति मकारे परे तदपि गुरु. Similarly, Krishnaha, Kra will be guru because it precedes the Sanyoga Akshara. Okay? Yes, sir. And here, because it follows by a Visarga, so this Krishna will become a guru. Mahodaya, tatra shakara will join to kr, Mahodaya. Krish iti guru, naha iti guru. Like that? No. Kro will be, by default, it is laghu. Because it is hasva rakara. But it precedes that sanyoga of shakara and akara. It is sanyoga of two letters. Sanyukta varnaha. So that purva varna will be guru. And now on sha and na is followed by a visarga. Akara and visarga. So this visarga will also be considered as guru. For example, aha or krishnaha. So this particular naha will become guruhu. Or krishnaha. Here krishnaha will become guru. Unmute भूत्वा वदतु यदि शंका अस्ति. रामः अस्ति चेत् मह इति दीर्घ न? गुरु है. हाँ, गुरु. विसर्ग. केवल राम होता तो
राम होता तो ह्रस्व होता, वो लघु होता। और सर जैसे नहीं नहीं, राह दीर्घ, परंतु मह अपि दीर्घ ना। हाँ, दीर्घ नहीं बोलते, विसर्ग गुरु कारणे बोलते, गुरु गुरु गुरु। दोनों अपि गुरु ना, राम। हाँ हाँ And even Ramam also will be Guru, no? हाँ, अनुस्वार भवति खलु। Okay, that also is Anuswara and Visarga go into Guru. बोथ इन गुरु। आम आम आम। अगर यह अनुदात्त हाँ, स्वर है तो क्या होगा फिर? क्या चीज? अनुदात्त उदात्त स्वर होते हैं तो वो तो इसमें स्वर में तो इसमें तो नहीं आता है, वो तो ये लघु गुरु के बाद में हम लोग स्वर के उदात्त स्वरित देखते हैं। मुकुंद कु गुरु कैसे हो गया? वो संयोग के के बाद पूर्व है, संयोग है ना। संयोग के पूर्व है। न और द का संयोग यहाँ पर है, देखिए न द का संयोग है, उसके पूर्व में यदि ह्रस्व स्वर है तो उसका दीर्घ होगा, मतलब गुरु आदेश हो जाएगा। हाँ महोदय। यहाँ पर देखिए मुंह ह्रस्व है उकार, तो उसका वो लघु रहा, पर यहाँ कु के बाद में संयोग है नकार दकार का, तो ये संयोग होकर के वो कु है वो गुरु हो गया। एंड ये नकार दकार के बाद में ह्रस्व आपको विसर्ग है, अकार और विसर्ग। सो बिकॉज ऑफ दैट अकार एंड विसर्ग, दैट अकेर एंड नकार दकार विल गॉट गुरु संज्ञा। इसका उच्चारण में कैसे गुरु होगा? वो जो मुकुंद तो वो लंबा हो जाता है। नहीं, ये छंद के ऊपर में है, लघु गुरु छंद के ऊपर में हम लोग उसका उच्चारण, हम लोग दीर्घ उच्चार नहीं करेंगे, ये हम लोग इसकी मात्रा काउंट करेंगे। जब हम मात्रा काउंट करेंगे छंद की या लघु गुरु करेंगे तो उसी में हमको देना है, उसका उच्चार दीर्घ नहीं करना है। नहीं, लेकिन अर्थ तो यही है, लघु तो एक पलक झपकने का है और वो आप गुरु है ह्रस्व 2 और बार। दीर्घ की बात करते हैं, और ह्रस्व और दीर्घ की बात करते हैं। यहाँ लघु और गुरु है, ह्रस्व दीर्घ नहीं है। अच्छा, मु अक्षरा लघु, कुन गुरु, दह गुरु, सम्यक हुआ? हाँ, अब देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम पश्यतु अत्र अकार अस्ति लघु अस्ति, भी अस्ति, सामान्यत्र ह्रस्व इकार अस्ति, लघु भवेत्, तो तस्मात् अनन्तरं य ञ इति संयुक्त वर्ण अस्ति, तस्मात् पूर्वं लघु अस्ति चेत् तत्र गुरु भवति। सो भी अपि गुरु, अत्र ज्ञा अस्ति, आकार अस्ति तदपि गुरु, पुनः नकार अस्ति न लघु, शा गुरु, कु इति अपि गुरु भवति, यतोहि अन्त इति संयोगः अस्ति। सो कु विल बी गुरु, ant will be laghu, and this lam will be anuswara, so they will be guru. Understood? समझ गए। ओंकार जी डाउट है? शाकुंतलम कैसे गुरु हो गया सर? लम का आपको मैंने बताया था अनुस्वार होगा, अनुस्वार, अनुस्वार और जो विसर्ग होता है वो दीर्घ होता है। लम में विसर्ग अनुस्वार चला गया ना, विसर्ग और अनुस्वार दीर्घ गुरु। हाँ, गुरु हो गया। आप दीर्घ मत बोलिए, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि दीर्घ का उच्चारण करना पड़ेगा हमको। Sir, can we say heavy and light, sir, instead? Yeah, that you can say whatever is convenient for you. But don't say Hasva and Dirgha. Hasva and Dirgha is used to denote whether these are Laghu or Guru. But as Asha ji told it, the Laghu, if it is a Guru word, the Ucharana will change, it will not change. Sir, but Mukund, there it is Guru, it is who is Guru now. Here is who is Guru. Yes, that's what I've written also. Laghu, Guru and Guru. And why it is Laghu in the Shakuntalam? Which one? Abhinata Shakuntalam, who you are telling Laghu, no? No, here
See, No, ku Ku is is Lagu. Guru Mahodaya. Kun is Guru. Which one? Have I written here? Yeah. No, So, it is written correctly, sir. So, Sudresh Mahoday, Patra Pashyatu, here, Ku is follow. If you say Ku separately, it is a Laghu. But now it's followed by a Sanyuktakshara under here. So that Sanyuktakshara, if it is preceded by a Sanyuktakshara, it will become Guru. Guru, okay. Right? So now consider a situation here that it is not a Visarga, right? So that Anda will be also a Laghu. Okay. But if I put a Visarga, it will be a Guru. Samaya samaptam iti manye. So we have to learn approximately 50 to 60 sanyas for our entry into the Panini. We will try to complete them. We will not do too much of a revision of that previous what we had done. We'll start with the sanyas also. Okay. Please prepare all this homework what you have to do for each sanya and Shopadesha Satvadi Karyani. सर चक्षु में क्षु जो है वो गुरु हो जाएगा। क और श, क और श जो आपका संयोग है, तो शु जो लास्ट है वो तो वो लघु रहेगा, शु वो लघु है, लेकिन च जो है वो गुरु हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग वयं समापयामः। धन्यवादः महोदय।